वेलकम टू 3S डिजाइनर होम्स गाइड। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे इर्रेगुलर और ओड शेप ब्लॉक के कुछ नफे और नुकसान की, इंक्लूडिंग की कंसिडरेशन वाइल सेलेक्टिंग, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑन इर्रेगुलर ब्लॉक ऑफ लैंड। इर्रेगुलर प्लॉट हम उन्हें कहते हैं जिस साइज और शेप पर हाउस डिजाइन थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज दे रिक्वायर मोर क्रिएटिव सोल्यूशन टू मेक द मोस्ट of the available space, taking additional local body restrictions in consideration. However, they can also offer unique opportunity for creative and architectural home design. I will explain things to consider in order to maximize the use of the space, or sometimes comes with additional benefits like subdividable and dual key livings opportunity for investors. So, let's check. हाय, मेरा नाम कमल सहानी है और मैं एक रजिस्टर्ड बिल्डिंग प्रैक्टिशनर और एक आर्किटेक्चरल इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, जो कि एसएसएस डिज़ाइनर होम्स बिल्डर फर्म को प्रेजेंट करती हूँ। 3S डिज़ाइनर होम्स गाइड के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्प करें जब भी आप कोई रेजिडेंशियल ब्लॉक बाय करें या फिर डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग और रेनोवेशन की प्लानिंग करें। Irregular loads are an excellent opportunity to create something unique. तो आपने irregular block में हमेशा कोशिश करनी है उसकी functionality and practicality के साथ साथ to give unique and attractive look while developing. In other words, from a developer's perspective, it is a design challenge that allows them to use the full extent of their skill. Irregular loads are not a very common choice and for being avoided, कई बार ये आपको बड़ी डिस्काउंट पर मिल जाता है। However, they are challenging to develop क्योंकि ब्लॉक काफी नैरो भी होते हैं, कई वाइड होते हैं, लेकिन उनकी डेप्थ नहीं होती। सो फॉर अ बेटर सोल्यूशन यू विल नीड टू वर्क विद एन एक्सपीरियंस्ड बिल्डर टू क्रिएट अ कस्टम होम डिजाइन और टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ स्पेस इंक्लूडिंग लुक्स फॉर अ ओपन गार्डन, लैंडस्केप्स एक्सेट्रा। अब हम इस तरह के ब्लॉक्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर नजर डालते हैं। फर्स्ट, इरेगुलर ब्लॉक्स आर टिपिकली लेस कॉस्टली देन स्टैंडर्ड ब्लॉक्स। सेकंड, यूनिक अपॉर्चुनिटीज फॉर कस्टम होम डिजाइन, स्पेशली विद द मोर स्पेस, मोर नेचुरल लाइट्स एंड नाइसर व्यू विद द पैटियो, बालकनी और गार्डन कंपेयर टू लैंडलॉक्ड ब्लॉक। थर्ड, great development and subdivision potential if comes in a good size. Irregular blocks can also have an excellent development potential. For example, the right triangular block with a wide rear has the ability to subdivide it into multiple lots. The uniqueness of the houses built on the irregular blocks also makes them an excellent site for a trendy Airbnb or a striking modern home design, but always subjected to local body approvals for any subdivisions. Now, if we look at some disadvantages, irregular blocks requires experienced custom home designers and builders. Building on odd shaped block can be complicated, so you really need to hire an experienced builder, architect, or an engineer who specialize in developing irregular blocks can help you assess the land, including soil quality, storm water requirement, etc., and complete the necessary paperwork like council requirements, building restrictions, etc. Another disadvantages could be restrictions on potential floor plans and building styles. So you need to work on that too. And irregular and odd shaped blocks can be in many different shapes and sizes. Like most common are narrow lots, triangular blocks, shallow blocks, battleaxe blocks, a wide front lot, corner blocks, asymmetrical blocks. अगर हम नैरो लोट्स की बात करें जो कि आजकल हम न्यू अर्बन डेवलपमेंट्स में देखते हैं विद 6 मीटर टू 15 मीटर फ्रंटेज, इन ब्लॉक्स में भी गुड साइज रूम्स और इनफ लिविंग स्पेस प्रॉपर नहीं मिल पाती ड्यू टू स्मॉल साइज और ऊपर से डेवलपमेंट एंड काउंसिल्स setback rules and design restrictions through our code. You will get more information on small and narrow blocks home design in my upcoming episode 1 part D. Next is triangular blocks. Triangular blocks are challenging to develop when using standard house plans. However, big sized triangular blocks are starting to gain popularity for unique and modern builds. A rectangular shaped house or structure can be usually built within a bigger triangular block. Then comes shallow blocks. Shallow blocks are not as deep as they are wide. इन blocks में limited floor plan ही बन सकते हैं क्योंकि इनकी डेप्थ कम होती है लेकिन ये चौड़े ज्यादा होते हैं। अब आप सोचोगे कि वाइड होना तो बेटर है बट नॉट ऑलवेज। रिमेंबर, आपको प्राइमरी स्ट्रीट सेटबैक रूल्स भी फॉलो करने
करने पड़ते हैं। यस, इस तरह के ब्लॉक पर आप डबल स्टोरी या मल्टी स्टोरी होम प्लान कर सकते हो इफ आर कोड अलाउ टू डू सो। द बेटलेक्स ब्लॉक्स, बेटलेक्स ब्लॉक्स अक्सर लोकेटेड होते हैं बिहाइंड फर्स्ट प्रॉपर्टी। इनकी कनेक्टिविटी मेन स्ट्रीट से एक नैरो पाथ या लॉन्ग ड्राइवे के थ्रू होती है, विच कैन बी रेगुलर और इरेगुलर इन शेप। इसमें बेटलिक्स के साथ साथ रियर स्टार्टर ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। Properties on a Betelgeuse block can be good for peace, privacy, and safety. As the property is far from the street, however, rear starter blocks pose some unique challenges that require careful planning. Furthermore, wide frontage lot. A wide frontage lot refers to a block with a wider area facing the street than the rear. Blocks with a wide frontage can be designed with a nice front yard or gardens. But again, if not enough size, then you can plan multi-story if R code allows. Now, you will be little surprised if I say corner block. A corner block can also be considered irregular. It refers to those corner lots that are located either at the intersection or roundabouts and having two streets, usually with a vision triangle cut. Though some corner blocks take a rectangular, square, or rectangular shape, others are asymmetrical, dome shaped, or a truncated triangular. It really depends on the street intersection. Corner block have high visibility, so privacy is the common concern. For more information on corner block, including its pros and cons, please visit my episode 1 part B on corner block. Now at last, asymmetrical blocks. Asymmetrical blocks refers to odd shaped. Those shape cannot be divided equally down the middle. These blocks often require a custom home design to suit the unique shape of the lot. और ये तो थे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल शेप्ड एंड साइज ऑफ द ब्लॉक्स। अब देखते हैं कि हाउ टू डेवलप दीज ब्लॉक्स इन अ फेवरेबल डिजाइन। हम अक्सर कंसर्न्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग थिंकिंग टू बाय दीज टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, राइट? और होना भी चाहिए, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस योर रिक्वायरमेंट इज कस्टम होम फ्लोर प्लान कंप्लायंस विद द आर कोड्स। एंड प्लीज नोट, हर स्टेट और हर सिटी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, सो डू चेक विद योर लोकल काउंसिल। आई होप आपकी मेन कंसर्न इस बात से थोड़ी दूर जरूर हो जाएगी कि इन ब्लॉक्स को भी डेवलप किया जा सकता है इफ कम्स विद इनफ स्पेस टू डेवलप, और इनकी डेवलपमेंट भी उतनी ही ईजी होती है जितनी की एक रेगुलर ब्लॉक की, जब तक आपके पास एक एक्सपीरियंस बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर है। बस थोड़ी हाउस शेप डिफरेंट और डबल स्टोरी प्लान करनी पड़ सकती है। यू शुड एक्सपेक्ट odd shapes, rooms, and spaces, but this doesn't have to be a negative thing. For example, some builders use those odd shaped area to put windows for more natural lights and create a pergola or patio or a balcony as an extra living space. I do agree you may need extra budget, especially when you are planning double story, because upper level construction cost is quite expensive as it comes under high height work risks. Before you talk to your developer, here are some tips to help you understand construction on irregular blocks. सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो है, please ensure that land meets all the benchmarks required by law, including accurate dimensions. In addition, a surveyor will help you to understand any building constraints or any boundaries necessary before you begin planning. Apart from the size and parameter, find out about site work requirements like soil type. It is mostly clay or loam. It's a good idea to conduct soil testing on any lot before you plan to buy. Knowing the feature of your land can help estimate building cost. Also, check out the surrounding areas around the block. Nearby tree or any other geographical feature can affect the land you are buying. Understanding all these allow you to carry out necessary site works before construction begin for your building strength and stability of your house. Design according to council planning requirements. Creativity and innovation are key to building on an irregular block. However, the property still needs to comply to the building codes implemented by a local authority or council. You can also listen my how to select block of land episode 1 part A to get more information about things to consider like site work requirement, block restrictions and setback rules, zoning, etc. before selecting a block of land. So you might be thinking, are irregular shaped lot harder to sell in the future? So my answer to your question is, it really depends on number of things. No doubt irregular shaped lot can be cheaper per square meter compared to regular block.
और अगर आपने उस ब्लॉक पर गुड साइज, यूनिक, हाई क्वालिटी और आई कैचिंग हाउस बनवाया है तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ एक्सीलेंट रीसेल वैल्यू. It also depends on location too. But yes, if an irregular lot is undeveloped or lacks unique assets, it can be more challenging to sell. The same holds with the small blocks. वैसे तो मार्केट में हर तरह के बायर्स हो सकते हैं, so don't lose your hope. पर ज्यादातर बायर हाई क्वालिटी हाउस डिजाइन एंड लोकेशन को प्रायोरिटी देते हैं. ब्लॉक शेप देन कम सेकेंडरी प्रायोरिटी. इसके लिए मेरी यही एडवाइस होगी कि इफ यू आर लुकिंग टू बाय सच ब्लॉक, then try to get it as cheaper as you can so that you can save some money to add value by spending more money on its development. Lastly, during your quest to find the perfect block of land, remember to consider the future. A highly functioning floor plan will not only add value to your lifestyle but also add the value of your home too. I would like to end this episode here. I hope you enjoyed this episode about pros and cons of a irregular or odd shape sized block. And if you did, please leave us a review. And do subscribe to listen my upcoming episode on small and narrow blocks home design series episode 1 part D. Thank you so much for your interest and attention.